Hello and welcome to this new tutorial. In this tutorial, we shall talk about the concept of cultural nationalism. आप सबका स्वागत है इस नई ट्यूटोरियल में और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कल्चरल नेशनलिज्म। Well, cultural nationalism is a form of nationalism that places primary emphasis on the regeneration of a nation as a distinctive civilization rather than as a discrete political community. So here when we talk about cultural nationalism, it is a form of a nationalism that places its most important emphasis on regeneration of a nation as a distinctive civilization. What does it mean? It means under cultural nationalism, the focus, the emphasis is stressed upon regeneration, revival, or a spiritual renewal of a nation as a spatial characteristic of civilization. And therefore, it doesn't give most important or more important to discrete political community, which basically means a individually separated or a distinct political community. In simple words, cultural nationalism focus more on nationalism and gives its primary emphasis on revival of a nation as a distinct civilization. जब हम सांस्कृतिक नेशनलिज्म की बात करते हैं तो ये जो सांस्कृतिक नेशनलिज्म है, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म है जहाँ पर जो स्ट्रेस होता है, जो प्राइमरी एम्फोसिस होता है, वो स्ट्रेस किया है ऑन रीजनरेशन ऑफ अ नेशन एज अ डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन। मतलब रिवाइवल या फिर स्पिरिचुअल रिन्यूअल ऑफ अ नेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ सिविलाइजेशन rather than giving importance to its political community. और इसीलिए जो कल्चरल नेशनलिज्म जो होता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो होता है, वो अपने देश को अपने कल्चर से उसको लिंक करता है, वो अपने रिलीजन्स से उसको एक रिवाइवल करने की कोशिश करता है या फिर एक स्पिरिचुअल रिवाइवल लाना चाहता है अपने देश में थ्रू कल्चरल नेशनलिज्म। और इसीलिए जो कल्चरल नेशनलिज्म है, ये एक इस तरह का नेशनलिज्म है जहाँ पर एम्फोसिस दी जाती है ऑन रीजनरेशन ऑफ अ नेशन एज अ डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन। मूविंग फॉरवर्ड, मोर प्रिसाइजली, कल्चरल nationalists view the state as a peripheral, if not alien entity, and therefore all these cultural nationalists always see a state as a part of their individuality, as a part of attachment to oneself. They relate the nation to themselves because they see the state through their culture and definitely not as an alien entity. और इसीलिए यहाँ पर जो कल्चरल नेशनलिस्ट जो होते हैं, ये अपने स्टेट को एक अटैचमेंट की तरफ देखते हैं। वो उनके और स्टेट के बीच एक अटैचमेंट देखते हैं, एक रिलेशन देखते हैं। और ये अमूमन इसलिए होता है क्योंकि जो स्टेट जो बनी है वो कल्चरली बहुत इन्फ्लुएंशियल बनी है, क्योंकि ये जो स्टेट जो बनी है ये एक कल्चर के ऊपर बनी है। अगर आप एक कल्चर को बढ़ावा देंगे, एक कम्युनिटी को बढ़ावा देंगे और दूसरे कम्युनिटी को आप अगर निगलेक्ट करोगे, तो इस सिचुएशन में जो डोमिनेंट कल्चर जो होता है या फिर जो डोमिनेंट कम्युनिटी जो होती है, वो हमेशा उस स्टेट को अपना एक हिस्से की तरफ देखेंगे। वो स्टेट और अपने बीच में एक कनेक्ट देखेंगे, एक रिलेशन देखेंगे, एक अटैचमेंट देखेंगे। और इसीलिए कल्चरल नेशनलिस्ट has always viewed state as a peripheral and not alien entity, whereas political nationalism is rational.
because that rationality is based on or in accordance with the reason and the logic. Whereas all those political nationalism or all those political nationalists gonna see a state from rational perspective, and this rationality is based on reason और लॉजिक. और दूसरी तरफ अगर हम एक पॉलिटिकल नेशनलिज्म देखें तो वो पॉलिटिकल नेशनलिज्म एक रैशनल अप्रोच को दिखाता है, और ये जो रैशनलिज्म जो होती है ये बेसिकली बेस्ड ऑन रीजनिंग और लॉजिक के ऊपर होती है. सो इसीलिए कल्चरल नेशनलिज्म डिफाइन स्टेट डिफरेंटली, whereas political nationalism defines state rationally. And in principle, cultural nationalism is mystical, which is based on a romantic belief in the nation as a unique, historical and organic. And therefore, in principle, when we talk about cultural nationalism, it is more mystical because it is based on that romantic belief of a nation. And this romanticism of a nationalism comes with an idea of a uniqueness, obviously with its history and the organic character of the country. And therefore, cultural nationalism draws more on a popular ritual, traditions and legends. And therefore, we have to see that whenever we talk about cultural nationalism, the influence of the cultural nationalism comes from that popular rituals which have been performed in the country or in the state, those traditions which have been there for 1,000 years, and obviously those legends which are associated with the cultural nationalism. और इसीलिए हमें अंत में ये समझना है कि जो कल्चरल नेशनलिज्म जो होता है ये एक मिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, और ये मिस्टिकल कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन रोमांटिक बिलीफ. और ये जो रोमांटिक बिलीफ होती है टुवर्ड्स नेशन, ये हमेशा एक यूनिक होती है, और उसके बहुत से कारण हैं कि ये यूनिक क्यों है. हिस्टोरिकली बहुत उसको इन्फ्लुएंस होता है, और ऑर्गेनिकली कि ये देश कैसे बना है. और इसीलिए जो कल्चरल नेशनलिज्म जो होता है ये हमेशा अपनी एक इंस्पिरेशन को ढूंढता है, और इसको इंस्पिरेशन बेसिकली मिलती है उन सारे पॉपुलर रिचुअल्स से जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, सारी उस ट्रेडिशन से जो भी ट्रेडिशंस है सोसाइटीज़ में फॉर 1000 ईयर्स, और वो सारे लेजेंड्स जो एफिलिएटेड है या फिर एसोसिएटेड है विद सच कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल nationalism. So in short, cultural nationalism is nothing but a form of a nationalism that plays most of its importance on regeneration of a nation as a distinctive civilization based on the cultural values and cultural traditions. So this is all about the cultural nationalism is all about. I hope you have understood the concept of cultural nationalism. Thank you very much for watching this tutorial, and I will see you soon in next tutorial. Till then, take care.